So this is the subject for the fifth semester student. The subject name is the database management system. So these are the various contents that we will discuss in this presentation, in today's presentation. The first we will talk about what is the DBMS. So to understand the DBMS, that is the database management system, there are the various terminologies. The first one is what is data, and the second one is what is the information, third one is what is database, and then the database system, and after that we will discuss the components that are used in the database system. Then we finally discuss the database management system, then we the need of database system, disadvantages of the various file system that are to be used previously before the database management system, and what are the advantages over the file system. So let's discuss what is DBMS. DBMS is the database management system. This is a system software for creating and organizing and managing the database. This is the system software. For example, we use the SQL or the Oracle software to organize the data in a table form, or that can be used in various websites to store that data and to manipulate that data. So the various system softwares are to be used to manage the data, that is known as the DBMS, that is the database management system. It provides the environment to the user to perform the various operations on that database for the storage, accessing, traversing, deletion of the any element from the database, adding any element on the database, merging the to values, etc. There are the various operations including in this. For the creation, insertion and deletion, updating and the retrieval of the data, that all are the operations that are to be included in the DBMS. So first we will discuss about what is the data. So data is the collection of the raw facts and the figure. Data is about in our daily day-to-day life. There are the many things, many object. Book is treated as an object, that is the data. In book there are the various lines or the various information is given. So all that information, all that words, all that for example your name, your address, your contents, all are the treated as a data. So the collection of the facts from which the conclusions may be drawn. These data can be represented in the form of numbers or the words. So the next point is the what is the information. The information is the systematic and the meaningful form of the data. It is basically the knowledge that is acquired through the various study and the experience. We will collect the various information. For example, for the same subject, for the DBMS subject, we collect all the information about the subject and then prepare our notes. So that is the information, the collection of all the knowledge. So information help the human beings in their decision making. So third one is the database. First we will discuss what is the data, and data are the facts and the figures which are represented by the numbers and the words in the for the storage purpose. And the next information क्या है, meaningful form of the data. So next one is the database. So the database is a repository of the logical, related or the similar data. These are the similar data which are combined together, an organized collection of related information so that it can be easily accessed, managed and updated. For example, हमारे पास एक इंग्लिश डिक्शनरी होती है, उसमें क्या है, ऑल द वर्ड्स जो है वो स्टोर होते हैं, हमें एक ही जगह पर मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज़ कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट के जो है हर एरिया का कोड क्या है, हर स्टेट का कोड क्या है, उसके लिए क्या है कि हमें पूरा का पूरा वो नंबर की जो है फाइल हमें मिल जाती है. फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज़ यूट्यूब पे हमारे पास वेरियस सिंगर्स हैं, तो किसी एक सिंगर की पूरी प्लेलिस्ट हमने चलानी है, तो वो भी क्या है, एक जगह पर स्टोर होंगे. तो डेट इज़ द डाटाबेस. सिंगल यूनिट में हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है. इन डाटाबेस क्या है, हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में अगर हम इन जनरल बात करें तो टेबल की फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव द कस्टमर डिटेल.
डेट इज़ द कस्टमर नेम हो सकता है, कस्टमर नंबर हो सकता है, कस्टमर की सिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में आपकी जो डिटेल है कॉलेज वालों के पास, वो आपका नाम है, एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, अब किस क्लास में, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो एक जगह पर हमारे पास एक्सेल में या कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें हम स्टोर करके रखते हैं। डेट इज़ द अवर डाटाबेस। सो नेक्स्ट इज़ द डाटाबेस सिस्टम। इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम विच हुज मेन पर्पस इज़ टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन। डाटाबेस सिस्टम का मेन काम क्या है कि हमारे पास एक बार इंफॉर्मेशन आ गई जो हमने एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट कर ली, आगे उसे हम मैनेज कैसे करते हैं। आइदर हम कोई न्यू स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो उसे क्या करते हैं, वहाँ पर न्यू एंट्री डाल देते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, चेंज करनी है, किसी ने फ़ोन नंबर चेंज किया है या क्लास चेंज हो जाती है, देन द अपडेशन इज़ टू बी परफॉर्म, data is to be done by the system to make that the information is available on the demand. There are the various advantages like the redundancy can be removed by the use of the database system. प्रीवियसली वी डाटाबेस सिस्टम से पहले हमारे पास फाइल सिस्टम था। फाइल सिस्टम में क्या है, जैसे हमारे पास हम फाइल्स में पेपर के फॉर्म में रिकॉर्ड सारा हम रख लें, तो वो क्या है कि हमें सारा का सारा जो रिकॉर्ड है उसमें डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आएगी। एक फ़ाइल बन गई, उसमें कोई चेंजेस करनी है तो नेक्स्ट जो है हम अलग से एक फ़ाइल बनाएंगे, डेट इज़ द डुप्लीकेसी। सो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं विद द DBMS सिस्टम, क्योंकि उसी में हम अपडेशन कर देंगे प्रीवियस फाइल्स में। इनकन्सिस्टेंसी कैन बी रिमूव्ड, कैन बी अवॉइडेड, जो एक्चुअल डाटा है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। डाटा कैन बी शेयर्ड, data can easily be shared by the DBMS system. Standards can be informed, security restriction can be applied, integrity can be maintained, data can be integrated. So data gathering can be possible, requirement can be balanced. There are the various components of the database system. Components mean the number of elements, the number of things that are to be used in database system. The first component is the users. Users are the people who interact with the database. There are the application programmers and user. application programmer जो coding purpose पे काम करते हैं, and users जो उस product को use कर रहे हैं. For example, Oracle is a software and we are using that software, so we are the end user. Database administrator whose main responsibility to handle all the database. Then second one is the software that lies between the stored data and the user. There are the various software related to the DBMS application softwares are there, user interface. So next one is the hardware component, physical device on which the database reside. Physical device मतलब हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, आइदर डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क यूज़ करें हैं, प्रिंटर यूज़ करें हैं, यहाँ पे मोबाइल्स यूज़ करें हैं, केबल्स यूज़ करें हैं, दैट ऑल आर द हार्डवेयर्स. नेक्स्ट वन इज़ द डाटा. डाटा इज़ in any form, numbers, character, pictures, so we can represent that data. Next, finally, the database management system. database management system का मेन पर्पस अब क्या हुआ कि जो हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा है उसे एक जगह पर स्टोर करके रखता है, एंड इट बिकम ईजियर to retrieve, manipulate and produce the information by using the DBMS system. Traditionally, we use the file formats, and DBMS was a new concept at that time, and all the research was done to make it overcome the deficiencies in the traditional style of the database management system. Previously, we have the file system, so there are the various files, there are the various problems are to be related to that system. So DBMS is mainly proposed to improve the problems that are related to the file management system. There are the data redundancy problem, that is a duplication problem that can be removed by the DBMS. Inconsistency problem, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग द डाटा. हमें अगर 2015 की कोई फ़ाइल चाहिए कॉलेज में, तो हमें क्या है, फ़ाइल सिस्टम में क्या है, वो फ़ाइल सर्च करनी पड़ेगी एंड देन हम डाटा को एक्सेस कर पाएंगे. विद द DBMS सिस्टम वी only write the keyword and easily access that data. Data isolation, if we have the multiple files and the format, different file format, different data type format, then that can easily be handled. Integrity problems can be easily be maintained with the DBMS. What are the disadvantages of the file system?
the things that can be improved by the DBMS are the disadvantages for the file processing. For example, the data redundancy problem are there, accessing for difficulty in the accessing of data isolation, data integrity, concurrent access is not possible, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, एडवांटेजेस दैट